Hello students. So today I am here with the next video on the important questions of class 10th NIOS and this is on book number 2. अब आप लोगों के मन में सवाल ये है कि अगर हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो क्या हमारी पूरी तैयारी हो जाती है? हमने कुछ भी कवर नहीं किया है अभी तक, क्या हम इसको करने से पूरी तैयारी हो जाती है? वेल द आंसर इज यस, लेकिन द थिंग इज आपको लेसन का आइडिया होना चाहिए, स्टोरी का आइडिया होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि स्टोरी है क्या. क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और बाय चांस क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट यू वुड नो द स्टोरी. एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चंस आएंगे, एक आएंगे फैक्चुअल, एक आएंगे आपकी ओपिनियन बेस्ड. फॉर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यू हैव टू नो द चैप्टर, राइट? एंड फॉर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस योर ओपिनियन मैटर्स, आप क्या फील करते हो, ठीक है. सेकेंडली यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू राइट द आंसर्स, राइट? सो I'm going to be covering all these things in this video also, like I did in the previous one. So watch this video till the end and you will be able to know the answers of all the important questions of book number 2 of NIOS class 10th. Let's begin. So lesson number 15 is my vision for India. इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? I कौन है? Who is I? So you should know I is Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, what according to Dr. Kalam should Indians protect, nurture and build on? Indians को क्या protect करना चाहिए, build और nurture करना चाहिए? So that is freedom. How would you write it is, according to Dr. Kalam, Indians should protect, nurture and build on freedom. Okay, next, mention a few achievements which have given India global recognition. In which fields is India still lacking? आपको दोनों ही चीज़ें बतानी है, कुछ अचीवमेंट्स जिनसे इंडिया को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है और कुछ ऐसी फील्ड जिसमें इंडिया अभी भी पीछे है. सो यू कैन से द अचीवमेंट्स which have given India global recognition are, you can either write it in para form or you can make it point form. जैसे अचीवमेंट का एक पॉइंट बना दो, लैकिंग का एक पॉइंट बना दो. So hosting of Commonwealth Games, development in entertainment, literature, science and information technology are the achievements, and India is still lacking in self-confidence, self-reliance and self-assurance according to the lesson. Question number 3. What according to Dr. Kalam should an Indian proclaim while talking about India? डॉक्टर कलाम के अकॉर्डिंग इंडियन को क्या सोचना चाहिए इंडिया के बारे में बात करने के टाइम पर? So according to Dr. Kalam, an Indian should proclaim that India is not an underdeveloped country, it is a highly developed nation while talking about it, right? Next, what according to you is the importance of freedom? According to you, what is the importance of freedom? So you can say, according to me, freedom is important because it is our fundamental right. Full stop. We can express our opinion, choice of religion, choice of work, etc. because of the freedom. That's all from lesson number 15, lesson 16, which is my only cry. Why does the child want the adults to talk of peace and fellowship? बच्चा एडल्ट से क्यों चाहता है कि वो पीस और फेलोशिप के बारे में ही बात करें? So you'll write like this, the child wants the adults to talk of peace and fellowship so that they may understand how important these ideas are for the world. Why does the child call it a deaf world? बच्चा उसे deaf world क्यों बोलता है? The child calls it a deaf world because it doesn't hear its cries, it shows his deep anguish. When he calls it a deaf world, this shows that he is in deep anger about it. Who does the child hold responsible for depriving him of this essential need? The child holds the adults responsible for depriving him of this essential need. Essential need क्या है? Freedom. Who can build a better world? Adults can build a better world. अब कुछ questions ऐसे होते हैं, आपको poem में से ही word दे दिया, group of words दे दिए, and you have to say कि इन words का meaning क्या है. तो
कुछ ऐसे वर्ड फ्रेजेस मैंने उठा लिए हैं. थिंक अबाउट टेमिंग द विंड्स का मतलब है सबड्यू एंड कंट्रोल द नेचुरल कैलामिटीज. अगेन ये एमसीक्यूज ही हैं लेसन के, तो लेसन के एमसीक्यूज आप एक बार कर लेना. थ्रू योर फॉल्ट मतलब द फॉल्ट ऑफ आर्म मेकर्स. अ वेल ऑफ डस्ट लाइज ओवर इट मतलब our lives are under the threat of weapons. And please remember कोई भी inside question ज्यादातर 10th में से नहीं आता, ज्यादातर आपके back questions में से ही आते हैं. Lesson number 17, caring for others. Where did Mother Teresa set up the first home for the sick and the dying? So you'll write like this: Mother Teresa set up the first home for sick and the dying in a dharamshala near the Kali temple. Who are the people who helped जानकी अय्यर in her work? अब आपको पता होना चाहिए जानकी अय्यर कौन थी. वो नॉन फॉर्मल स्कूल चलाती थी जिसमें घर की जो हाउस होल्ड हेल्प्स होती हैं, मेड्स होती हैं, उनको नॉन फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है. उनका एक स्कूल था जिसमें उन्होंने किन लोगों को रखा था, वो इसका आंसर है. द पीपल हु हेल्प जानकी अय्यर इन हर वर्क आर young professionals to run the school, computer professional helps with the school's accounts, linguistic professor teaches Hindi, another teaches English, another professor teaches music, and some teachers have also been kept from less privileged class who work at the school. तो सारे ही टीचर्स के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मदर टेरेसा मेक हर पेशेंट्स फील कंफर्टेबल? मदर टेरेसा अपने पेशेंट्स को कंफर्टेबल फील कैसे कराती हैं? So Mother Teresa made, क्योंकि did है, made her patients feel comfortable because she looked after her patients. She made them feel wanted and she made them feel that they were not alone and these people were loved and cared for. Next question. Okay, now this is also very important question. भाग्य वाला है कि इसमें भाग्य is also a domestic helper, जिसमें उसको कुछ पैसे वो कमाती है और अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेती है. बट उसको एक चॉइस दी गई कि अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए जाएं, ज़्यादा काम दिया जाए, तो तुम्हारे पास टाइम तो कम बचेगा पढ़ने के लिए और पैसे ज़्यादा मिलेंगे. अब भाग्य के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या थी? बिकॉज उसे पढ़ना भी पसंद था और उसे ये सब नई नई चीज़ें खरीदना भी पसंद था. सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस फॉर हर, बट अल्टीमेटली उसने अपनी पढ़ाई को चुना, उसने ज़्यादा पैसों को नहीं चुना. सो दिस इज़ द सेम क्वेश्चन दैट इज़ डिस्कस्ड हियर. व्हाट वाज द डिफ़िकल्ट चॉइस भाग्य हैड टू मेक? कौन सी डिफ़िकल्ट चॉइस थी जो भाग्य को लेनी पड़ी, बनानी पड़ी? फॉर द वर्क Bhagya did as a domestic helper, she got money with which she could buy clothes, slippers and other pretty things. When she was offered more work, she would get more money but less time to study. तो problem क्या थी? ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा पैसा लेकिन less time for study. She liked both school and the pretty things she could buy with the money, but she had to make a difficult choice between studying or more money. And ultimately she chose her studies. अब आते हैं आनंद भारती एक यूनिक स्कूल कैसे था, या क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, आनंद भारती की एजुकेशन को सीरियस बिजनेस क्यों कहा जाता है? तो आनंद भारती जो था एक नॉन फॉर्मल स्कूल था लेकिन वो बहुत ज़्यादा सीरियस था एजुकेशन के बारे में. बेशक वो नॉन फॉर्मल की तरह फ्लेक्सिबल था, बट एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड हाईली इम्पॉर्टेंट इन द स्कूल आनंद भारती. तो इसने बहुत ज़्यादा सीरियस था वो एजुकेशन के बारे में, इसलिए हियर एजुकेशन वॉज अ सीरियस बिजनेस. सो यू कैन से लाइक दैट, ऑल्दो आनंद भारती वॉज अ नॉन फॉर्मल स्कूल, इट इज़ वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन. It is flexible like a non-formal institution, yet its students write public examination and even go on for higher studies like the students of a formal school. It shares the problems of its students and tries to solve them. It builds trust and confidence in themselves and supports them throughout their stay in the school. So the entire answer is complete in itself. Now let's move on to lesson number 18, the little girl, जो केजिया के बारे में है. एंड केजिया इज ऑलवेज थिंकिंग दैट उसे अपने फादर का प्यार मिल सके. What was the real reason behind केजिया स्टटरिंग? स्टटरिंग मीन्स हकलाना. केजिया के हकलाने के पीछे क्या रियल रीजन था? Although
केजिया एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन अपने फादर के सामने उसका कॉन्फिडेंस एकदम लूज हो जाता था, बिकॉज वो हमेशा उसको डांटते रहते थे, इसलिए वो बात बात पर हकलाती थी उनके सामने, बट अदरवाइज दूसरे लोगों के सामने शी नेवर यूज टू स्टटर. So you'll say the real reason behind Kezia's stuttering was the lack of confidence in the presence of her father. He would rebuke means datna, rebuke her whenever she stared at him. She was afraid of him to the extent that she started stuttering in his presence. She never stuttered in the presence of others. Question number 2. Kezia clung to her grandmother and sobbed. What did God make fathers for? Why do you think she'd said so? केजिया ने अपनी ग्रैंडमदर से रोते हुए क्यों कहा कि भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों है? उसने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज उसके फादर हार्श और एंग्री रहते थे. सो यू कैन से केजिया said these lines because she found her father to be harsh and angry all the time. Next question. Why did Kezia's father punished her? केजिया के फादर ने उसे पनिश क्यों किया? Just to recall that incident, केजिया अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहती थी, जो ताकि उनके जो पिन्स वगैरह हैं वो एक जगह पर एक साथ रहें. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, उसने फादर की एक इम्पॉर्टेंट पेपर को यूज़ कर लिया था एंड इससे फादर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको काफ़ी पनिश किया. सो Kezia's father punished her because she had accidentally destroyed his speech when she made a pincushion for him, and punishment was his way of teaching her a lesson. Next question. Comment on the role of grandmother in trying to make the family atmosphere warm and friendly. ग्रैंडमदर के रोल को डिस्क्राइब करना है कि इस लेसन में ग्रैंडमदर का रोल फैमिली एटमॉस्फेयर को बेटर बनाने का कैसा था. तो इसका आंसर है द ग्रैंडमदर वाज केयरिंग. She spent time with Kezia and took interest in her matters. She encouraged to have a nice talk with her parents. She advised her to make a pincushion for her father with the intention to bridge the communication gap between the two. So, in the end, you can conclude your answer by saying that so grandmother was very helpful in trying to make the family atmosphere warm and friendly. तो आपने पहले कुछ बात बोली और आपने एंड में इस आंसर को कंक्लूड भी कर दिया, ताकि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको आंसर भी बड़ा हो जाएगा एंड इट विल लुक कंप्लीट इन इटसेल्फ एज वेल. लेसन नंबर 19 इज अगेन अ पोएम, A Prayer for Healing, and the poet is Maggie Galtiano. What do the words, phrases to bring to new life, to restore, to refresh and to renew suggest? ये words और phrases क्या suggest करते हैं? The words or phrases to bring to new life, to restore, to refresh and to renew suggest that life, air, water and forest should be brought back to their old condition. When the air was pure, water was clean and plentiful, and forests were thick and full of resources. Resources were not overused, animals and birds were safe in their natural habitat and not hunted by human beings. तो सारी चीज़ों की लाइफ कैसी थी, एयर कैसी थी, वाटर कैसा था, फॉरेस्ट कैसे थे, एनिमल्स कैसे थे, बर्ड्स कैसे थे, इन सब चीज़ों को इनकी पुरानी सेल्फ में वापस लाने का मतलब ही है रिस्टोर, रिफ्रेश और रिन्यू करना. What do you think the poet means by recreate the human community? The poet means by recreate the human community that we should try and create a community where people live in harmony with each other and with their surroundings, where justice is valued, where all living things, that is animals, birds, plants and human beings, are respected and cared for. What does the poet mean by the phrase many and diverse expressions of one loving mystery? The poet means by the phrase many and diverse expressions of one living mystery that no two human beings on this planet are exactly the same. They are different from each other due to their looks, temperament, culture, beliefs or religion. Yet, there are many things that human beings have in common. We need to live in harmony with each other and with nature. What is the main idea of the poem A Prayer for Healing? The main idea of the poem A Prayer for Healing is to work together.
The poem is an appeal to everyone to work together to bring the earth back to its old healthy state, to protect it and leave it in a good condition for future generations. Lesson number 20, New Good Things from Rubbish. How is reusing of waste beneficial? Explain. The question can also be reworded like, why is it important to recycle waste? Recycle waste या reuse waste क्यों करना चाहिए? So you can say reusing of waste is beneficial. Yeah, you can say recycling of waste is beneficial because it will help to save our natural resources which are limited in quantity. या आप ये भी कह सकते हो it will help to save our non-renewable resources. Non-renewable means जो कि renew नहीं हो सकते and that means they are limited in quantity. It will reduce the pollution caused by burning it. तो जब pollution इनको burn करने से pollution नहीं होगा तो इसलिए इनका waste हमारे लिए फायदेमंद होगा because pollution से global warming भी होती है. How is metal recycling different from plastic recycling? Explain. Metal की recycling plastic की recycling से better कैसे है? Metals can be recycled easily to make new forms of good quality metal. They are not wasted. तो मेटल को जब रिसाइकिल किया जाता है बढ़िया क्वालिटी का मेटल बनता है. दूसरी बात वो वेस्ट नहीं होता ज़रा सा भी. बट प्लास्टिक रिसाइकिल करने से लोअर क्वालिटी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं एंड अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट भी हो जाता है. सो दीज आर द 2 points ऑफ डिफरेंस. नेक्स्ट, suggest 2 ways, very important. Suggest 2 ways in which a student can avoid wastage of paper. Students wastage of paper कैसे avoid कर सकते हैं? कैसे? The students can avoid, a student can avoid wastage of paper by using the following measures. Using the margin for calculations, writing on both sides of paper, doing rough work with pencil ताकि वो erase हो जाए, using recycled paper notebooks, using slate and chalk for practice, covering notebook with used chart papers and donating textbooks to others after use. Next question, how can recycling help in checking global warming? Recycling से global warming कैसे हम prevent कर सकते हैं? So you can say recycling helps in checking global warming because it reduces air pollution which is caused by the burning of waste material. Harmful gases which is the chlorofluorocarbons, आपकी मर्जी है, वैसे ये लेसन में है नहीं तो आप avoid भी कर सकते हैं. Released by the burning of waste destroys the ozone layer of the atmosphere. This causes global warming. Thus, the lesser the burning, the less would be the air pollution and hence global warming. Lesson number 21, village pharmacy. ये ज़्यादातर की टाइटल एप्ट क्यों है? विलेज फार्मेसी क्यों कहते हैं नीम को? इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा. ज़्यादातर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़. सो यू कैन से द टाइटल विलेज फार्मेसी इज एप्ट या अप्रोप्रिएट या सूटेबल इसलिए है क्योंकि फार्मेसी क्या है? फार्मेसी इज अ प्लेस वेयर यू गेट मेनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन. इन द सेम वे नीम प्रोवाइड्स मेडिसिन टू मेनी काइंड्स ऑफ डिसीजेस. स्किन पर बॉयल्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाता है, वूंड्स हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, डेंटल प्रॉब्लम्स, क्लीन करता है टीथ को, फेस पर एक्ने हो जाता है, डायबिटीज़ लोगों को हेल्प करता है कर्ब करने में. और नीम का जो है एवरी पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज़ यूज्ड, बी इट इट्स लीव्स, उसके ट्विग्स, उसके ब्रांचेस, उसका फ्रूट, उसका बाक, उसके फ्रूट का पेस्ट, उसके लीव्स का पेस्ट, उसका जूस, एवरीथिंग, इवन द रूट्स, everything gets used. So you can say this also. Next you can say कि सिर्फ लगाने के लिए नहीं, humans के लिए नहीं, it also acts as a mosquito repellent. तो इससे मलेरिया भी कर्ब हो सकता है. It is also helpful for the agriculture because it is agro-friendly. It acts as a natural pesticide. It purifies the air. It helps the environment. Very important, it is very safe. It has no harmful side effects. It is very easy to obtain neem because the neem tree is available everywhere. Also very important, it is available free of cost. We don't have to pay for it. So the village farm, it is very rightly titled as the village pharmacy. Next question. ये आप पढ़ लेना क्योंकि इसमें कुछ कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. जैसे नीमा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 8th क्लास में. उसके फादर क्या थे? डॉक्टर लिखोगे या पेडियाट्रिशियन लिखोगे? पेडियाट्रिशियन इज द राइट आंसर बाय द वे. नीमा केम होम विद द नीम सैपलिंग इन हर हैंड. द फायर एक्सीडेंट टुक प्लेस कौन से गांव में? कुंभकोणम विलेज. एंड नीमा के ग्रैंड पेरेंट्स उसे
मिलने आए थे. Next lesson is lesson number 22, The Truth, and the poet is Barry Waite. What have words in the poem been compared with? Words को poem में किस चीज से compare किया गया है? The words in the poem have been compared with ghosts. Very important question. Number 2. Words, stick and stones hurt us. In what way do they differ in their impact? Words, sticks और stones तीनों से हमें hurt होता है, लेकिन इनका impact, इनका जो effect है हम पर, वो किस तरह अलग है. So you can say words hurt our mind and heart. Sticks हमारी body को hurt करते हैं. Words cause mental and emotional injury. They hurt deeply. Sticks and stones cause physical injury. Impact of words injury is lasting. Sometimes it can never be healed also. It takes a long time to heal. Sometimes it doesn't heal. Impact of stick and stone injury can be healed with medicine and with time. Okay, so very important question. Okay, why do words hurt more than weapons? Again, weapons हो, stones हो, sticks हो, इसमें बेसिकली आपको यही बोलना है कि वर्ड्स की जो इंजरी है वो ज्यादा है और बाकी जो फिजिकल इंजरी होती है दैट कैन बी हील्ड. Physical injuries caused by weapons can be healed, but the pain caused by words does not go away. Which word has been repeated in the poem? How many times has it been repeated? And why has the poet repeated it? The word words has been repeated. How many times? 6 times. It has been repeated to emphasize the importance and significance कि words हमें सोच समझ कर बोलने चाहिए. The effect of words on us is the focal point in the poem. Poem का main point यही है कि words का effect क्या है हम पर. Alright, lesson number 23, Return of the Lion. This is about the वो शिवाजी and जीजाबाई के बारे में जो lesson था. तो first question is, why did जीजाबाई agree to meet the sadhus? Give 3 reasons. जीजाबाई agreed to meet the sadhus because of the following reasons. ठीक है, पहला reason, they had come from far. Number 2, she thought they may have news about her son. Number 3, she also wanted their blessings. Why do you think Shivaji was in disguise when he came to meet his mother? शिवाजी डिस्गाइज में यानी कि भेष बदल कर क्यों आए थे अपनी मम्मी से मिलने के लिए? शिवाजी was in disguise when he came to meet his mother because he wanted to escape recapture by Aurangzeb as he had escaped from his captivity in Agra. Secondly, he wanted to meet his mother, and finally he also wanted to know whether he was safe in his own kingdom. Next question, why did Jijabai refuse to believe that Shivaji was dead? Very important question. जीजाबाई ने क्यों मानने से इनकार कर दिया कि शिवाजी की मृत्यु हो चुकी है? जीजाबाई refused to believe that Shivaji was dead because she did not believe what was written in the letter. Since she did not, पहली बात, she did not trust Aurangzeb. She also believed that her son was brave and strong man, and Aurangzeb could not kill him easily. Lesson number 24, cooperate and prosper. इसमें 2 लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है. पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड दूसरा डॉक्टर क्यूरियन, जिनको फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए बिकॉज ही स्टार्टेड ऑफ विद दिस बट ही कुड नॉट कंप्लीट इट, बट हिज ड्रीम वाज रियलाइज्ड बाय डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. तो ये दोनों नेम्स इस लेसन के लिए आपको याद करनी है. लेसन इंपॉर्टेंट है काफ़ी और इसके 2 मार्क के, 3 मार्क के या 5 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सरदार वल्लभ भाई पटेल वांट टू एलिमिनेट मिडलमैन? पहले बता दो कि मिडलमैन क्या करते थे, इसलिए उन्हें क्यों एलिमिनेट किया जाना जरूरी था. द मिडलमैन यूज्ड टू बाय प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स एट चीप रेट, मतलब फार्मर से चीप रेट में खरीदते थे और मार्केट में बेच देते थे महंगे प्रॉफिट में, और फार्मर्स को हैरेस करते थे कि चीप रेट में ही सेल करो. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल फार्मर्स की कंडीशन को देखकर बहुत बुरा फील करते थे और वो चाहते थे कि मिडलमैन को किसी भी तरह एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि फार्मर्स अपना प्रोड्यूस खुद अपने आप जाकर मार्केट में बेचें और प्रॉफिट खुद ही कमाएं. The middlemen used to buy produce from the farmers at cheap rates and sold them in the market at huge price. They used to harass farmers to sell at cheap rates. Sardar Vallabhbhai Patel felt sorry to see the plight of the poor cattle rearing farmers who remained poor even though they worked so hard. So he wanted to eliminate the middlemen. ठीक है?
Next question. What was Sardar Vallabhbhai Patel's dream? Who realized it finally? Important question hai. Sardar Vallabhbhai Patel's dream was to bring farmers together, to remove middlemen, to save farmers from harassment and exploitation, and to do something which would remove their poverty and give them a steady flow of income. Who realized it finally? Dr. Verghese Kurian realized the dream finally. Last question, very important again. Why is Dr. Kurian called the father of the revolution? ये भी हो सकता है who is called the father of the revolution and why? तो पता होना चाहिए Dr. Verghese Kurian was called the father of the white revolution because white is the color of milk. He was called the father of the white revolution because with his ideas he was able to ensure a very high production of milk in the country, which was a remarkable change. ठीक है, तो इसीलिए उन्हें व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, क्योंकि मिल्क वाइट है इसीलिए व्हाइट रेवोल्यूशन उसका नाम दिया गया. और उसी की वजह से टुडे इंडिया इज रैंक्ड अमंग द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Lesson number 25, Once Upon a Time, and the poet is Gabriel Okara. What do the words there was a time refer to? The words there was a time refer to a time long past. बहुत पहले की बात है. Important question, how can a person laugh with his eyes and heart? एक person आंखों और दिल से कैसे हंस सकता है? A person can laugh with his eyes and heart when they laugh heartily. And with true feelings, it gets reflected in our eyes. तो हार्टिली और रिफ्लेक्टेड इन आवर आइज लिखना जरूरी है ताकि पता चल जाए आइज और हार्ट किसे कैसे हंसा जाता है. नेक्स्ट, what does the expression feel at home mean? Does the poet feel at home in the situation he describes in this stanza? Very important question. The expression feel at home means to feel comfortable. फील एट होम मतलब आराम से रहो, अपना ही घर समझो. सो फील एट होम, कंफर्टेबल हो जाओ. क्या पोएट सचमुच उस सिचुएशन को कह रहा है कि फील एट होम है? नो, द पोएट डज नॉट फील एट होम इन द सिचुएशन ही डिस्क्राइब्स इन दिस स्टैंजा बिकॉज ही फाइंड्स दैट ही इज नॉट वेलकम्ड if he or she becomes a frequent visitor, even though he is told to feel at home and to come again. So basically, people don't mean these words and these are fake words. बेशक उनको कहा जाता है कि दोबारा आना, come again, feel at home, but they are not welcomed. These words, these phrases are fake words. People don't actually mean these words. Okay. Next question, very important again. Which learnings by the father refer to emotionless relationships? Father किन lessons को कहते हैं? So he says that to laugh with his teeth and to shake hands without heart को कहते हैं emotionless relationship. एक और question है इसका, smile like a snake's bare fangs आपके मन में क्या पिक्चर लाती है और इसका मतलब क्या है? पहली बात, a laugh that shows the teeth like a snake's bare fangs brings to mind a laugh that is without real feelings. So a person whose laugh is falsely pleasant, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, तो that looks very fake and therefore dangerous and deceptive. धोखेबाज, धोखे की तरह का मुस्कुराहट है, like a snake. The poet has used this simile to show that he has forgotten to laugh with real feelings and pleasure. When he laughs, he does not laugh with his eyes and heart, but only by showing his teeth. Next question. What has the poet forgotten and what is his desire? Poet क्या भूल गया है और उसका desire क्या है? Poet अपनी true natural self भूल गया है और वो दोबारा से उसको लाना चाहता है. So you will write, the poet has forgotten his true and natural self. His desire is to get back, he wants to get back to his state of innocence when he was open and honest about expressing his feelings and thoughts. Next question. By addressing his son, who is the poet also addressing? अपने बेटे से ये सब बातें वो कह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो किस और को भी एड्रेस कर रहा है, वो कौन है? So by addressing the son, the poet is also addressing all the adults of the modern world who have lost their innocence and are artificial, sometimes heartless in their behavior.
He is trying to tell them to relearn from their children how to be natural, sincere and honest. Lesson number 26, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. इसमें भी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहाँ पर पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन डुमराव. उनके फादर का नाम क्या था? पैगंबर खान. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मैटरनल अंकल का नाम क्या था? इट वॉज अली बख्श. वाराणसी कितनी उम्र में चले गए थे? 6 साल की उम्र में. एंड कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे? इट वॉज शहनाई. हु वॉज बिस्मिल्लाह खान? वाई वॉज ही फेमस? Bismillah Khan was one of India's finest classical musicians. He attained mastery over Shehnai and became world famous. He was often called the Shehnai Maestro. He was famous because he received the rare honor of being awarded all the 4 top civilian awards, including the Bharat Ratna. What did Bismillah Khan mean when he said music has no caste? Bismillah Khan ने क्या कहा, क्यों कहा कि म्यूजिक की कोई कास्ट नहीं होती? बिस्मिल्लाह खान meant that in music there are no barriers of caste, creed or religion. Music is universal. One does not think of caste or religion of the musician when one is enjoying his or her music. For example, Sufi music, Bhakti Sangeet is sung and enjoyed by people of all religions. Last lesson है The Parrot Who Wouldn't Talk. Where did Aunt Ruby get the parakeet from? Aunt Ruby ने उस parakeet को कहाँ से खरीदा था? Aunt Ruby bought the parakeet from a bird catcher selling various types of birds. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. Who is saying these words and to whom? Which word is being repeated and why? ये words किसने कहे थे? Aunt Ruby ने कहे थे. कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? कांट रिपीट हुआ है. और क्यों रिपीट हुआ है? क्योंकि वो एम्फसाइज करना चाहती थी कि वो कुछ नहीं कर सकता. टू एम्फसाइज व्हाट इज बीइंग सेड. तुम कुछ नहीं कर सकते. कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस. यू आर गुड फॉर नथिंग. What all did Aunt Ruby's nephew, who is the author, give the parrot to eat? Aunt nephew के जो nephew थे, जो कि author भी हैं, उन्होंने parrot को क्या क्या खाने के लिए दिया? So Aunt Ruby's nephew gave the parrot green chilies, ripe tomatoes and sometimes slices of mango to eat. The author thinks that the parrot came back because it missed green chilies. Why do you think the parrot came back? आपको क्यों लगता है parrot वापस क्यों आया? 2 बातें. The parrot wanted to please the narrator को खुश करने के लिए, and Aunt Ruby को irritate करने के लिए. So the parrot came back to please the narrator and to irritate Aunt Ruby. Last question. आपको क्या लगता है कि Aunt Ruby का मेथड जो था parrot को टीच करने का वो सही था? आप उनकी जगह होते तो कैसे पढ़ाते? Well, I think Aunt Ruby's method of teaching the parrot was not the right method or was not the correct method. If I were Aunt Ruby, I would develop a bond with the parakeet and then try to teach it to talk. I would always speak to it gently and make sure it was comfortable in its surroundings. I would choose simple and short words to start with. I would repeat them clearly and with enthusiasm. I would be very patient and never get angry with my pet. I would not scold it if it didn't learn well. I would praise it, give it a gentle pat or something special to eat if it learned well. So that's all for this from this book. I hope you have understood all the lessons that we have covered in today's video. Please do watch this video again to understand all the facts and the important opinions that you must know before you sit for your exam. Do share it with your friends who are preparing for NIOS Class 10th English paper. And I wish you all the very best in your exam and your preparation. Good luck. Bye-bye.